Good morning, guys. So here we'll be discussing couple of sums on rectilinear figures proving sums. This is now lecture number 2. Okay, in the previous lecture we did 6 sums. Okay, on rectilinear figures proving sums. So today the rest of the sums. Okay, so whatever sums are there on the board we'll be completing them. Let's get started. Okay. So basically to prove any a given quadrilateral is a parallelogram. To prove the given quadrilateral is a parallelogram, there are multiple ways to prove that. One is when both opposite sides are equal. When both opposite sides are equal. Second way is when both opposite angles are equal. Third way is when both opposite sides are parallel. Okay, and fourth way is when one pair of opposite sides are equal as well as parallel. मतलब दोनों होना चाहिए. जब दो साइड इक्वल हो गए तो भी चलेगा, जब दो साइड पैरेलल हो गए तो भी चलेगा, जब दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए तो भी चलेगा, एंड लास्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट शुड बी इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देन वी कैन से it's a parallelogram. ठीक है बेटा? So इतना condition is essential to prove it's a parallelogram. So you're meeting that. I'll tell you. Don't worry about sums. ठीक है? So just pay attention on how I'm doing it. Okay? Any question after my explanation, please do ask. Okay? चलो, let's get started बेटा. So here मुझे दिया है ABCD is a parallelogram given है. क्या बेटा? ABCD is a parallelogram given है. Also they are given AP and CQ are equal. I need to prove that VPDQ is a parallelogram. For that I am taking this triangle first. Triangle CQB दिख रहा है बेटा? And triangle DAP दिख रहा है आपको बेटा? You all have to help me out. मेरा बच्चा CQ is equals to AP given. AD is equals to BC. Opposite sides of parallelogram are equal, and can I say BCQ is equals to DAP, alternate angles. Therefore first step beta, I'll write it down. Can I say triangle BCQ is congruent to triangle DAP by SAS test. Therefore by CPCTC can I say BQ is equals to DP by CPCTC, can I say? Second step, similarly I will prove triangle APB, दिख रहा है ये triangle APB and triangle DCQ. I will prove these two triangles बेटा. Okay? कैसे बेटा? Vertically opposite angles CQ and AP are equal, and with your permission can I say this angle and this angle are equal. Angle DCQ is equals to angle BAP by alternate angles. Therefore again can I say second step would be triangle DCQ congruent to triangle BAP by again same SAS test. And therefore by CPCT I can say DQ is equals to BP. Okay, by CPCT. Now can I conclude from first and second statement? In quadrilateral BPDQ, BP is equals to DQ and BQ is equals to DP. Since both opposite sides are equal, therefore quadrilateral BPDQ is a parallelogram. So is there a property where each diagonal of a parallelogram does two congruent triangles? Yeah, you can say by the parallelogram. In a parallelogram, it divides into 4 equal triangles. 4 triangles. Like that. You have to use one of the properties of parallelogram to show. They bisect each other, you can say. So how do you prove this is a bisecting sum?
बेटा देखो BD एंड PQ अगर बाइसेक्ट करता तो देन यू हैव टू शो दैट BD एंड PQ आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. So how do you show that? That so that's a different way. In this the given data point, okay, I can prove it by opposite sides are equal. See, understand one thing. Always try to use method wherein you can recall in exam. There are multiple ways for each sum. Okay, you can use different properties. This might be a little bit okay because I am going with two congruency, बराबर? But this is one of the easiest method which I can recall. Okay, एग्जाम में रिकॉल भी करना है अपने को और लिखना है. That's fine. चलो बेटा ये देखो, I am not going to erase board so don't worry about it. Okay, देखो. Prove that it is given P is midpoint of AB, Q is midpoint of DC. Prove that APCQ is a parallelogram. Okay, prove that APCQ is a parallelogram. But अगर P is midpoint of AB and Q is midpoint of DC, मैंने आपको क्या बोला था बेटा, याद है आपको? Whenever midpoint is there, take 2x, so it will get divided to x and x. ठीक है? So I'll assume let AB and DC be, since opposite sides are equal, so let AB be 2x, so DC is also 2x because of midpoint x and x, x and x. Agreed इतना? बेटा लिसन हो गया अपना काम. In quadrilateral APCQ, AP and CQ are equal. Will you agree? Also, can I say AP and CQ are parallel? Why they are parallel? Because they lie on AB and BD. Yes, because ABCD is a parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. So therefore, AP and CQ also becomes parallel. ठीक है? Since ABCD is a parallelogram. Therefore, AP parallel to CQ. Okay. Therefore, combined statement quadrilateral APCQ is a parallelogram. Reason: since one pair of opposite sides are equal and parallel. Will you agree? Since one pair of opposite sides are equal and parallel, it's a parallelogram. Since one pair of opposite sides are equal and parallel, it's a parallelogram. Since one pair of opposite sides are equal and parallel, it's a parallelogram. ठीक है बेटा. बेटा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है. फिफ्थ वन, पे अटेंशन गाइस. बच्चा, एवरीवन पे अटेंशन फॉर द फिफ्थ वन. यू राइट, बट आराम से, कोई गाइड नहीं है. So here AP and BQ are bisectors. ABCD is a parallelogram. क्या है बेटा गिवन? ABCD is a parallelogram given. And AP and CQ are the bisectors. AP and BQ are the bisectors. The moment they said the bisectors, मेरे दिमाग में तो सिंपल है, क्या है? X X और बाजू वाला Y Y. ठीक है बेटा? ठीक है. तो पहले आप लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं. Can you observe triangle ABQ? दिख रहा है? A, B and Q. एंड सिमिलरली आपको दिख रहा है ए बी पी. दिख रहा है आपको? ओके. चलो मैं इधर बता देता हूँ ए बी क्यू. चलो ये वाले पे पहले फोकस करते हैं. मेरा बच्चा ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है? Yes. Why? Parallel. ABCD is a parallelogram, so AB and CD has to be parallel. So BQ and AQ and BP are also parallel बेटा. ठीक है? So अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो alternate angle से क्या? This is X. So this also becomes X. similarly if this is Y, this also becomes Y. Perfect बेटा. That means in triangle AQB ये Y है और ये भी Y है. Similarly in triangle ABP ये X है तो ये भी X है. Okay. So दोनों कौन सा triangle बन गए? Isosceles triangle. So from here I can conclude since base angles are equal, therefore I can conclude AQ is equals to AB. And from here I can conclude AQ BP is equals to AB बेटा. Okay. So combining 1 and 2 I can say AQ is equals to BP. बराबर बेटा. तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप इन क्वाड्रिलेटरल ABPQ. दिख रहा है ABPQ बेटा. Can I say with your permission AQ and BP are equal? बराबर.
AQ and BP are equal, अभी प्रूव किया मैंने. Also can I say AQ is parallel to BP? AQ is equals to BP and AQ is parallel to BP. Can I say बेटा? AQ equals to BP and AQ parallel to BP. Can I say? Therefore combining both of them, therefore quadrilateral ABPQ is a parallelogram. Since one pair of opposite sides are equal and parallel. बराबर? Perfect है? So, isn't x equal to the other x and y equal to the other y, so can't we write that? Means? So, so angle A is equal to the opposite angle and angle. No, how can I say directly? An entire angle A is not equal to entire angle P. Only one part is equal. Okay? पूरा होता तो मैं बोल सकता since both the opposite angles are equal. Okay? See, this angle x and this angle x are not equal yet. Okay? Because we don't know AB and PQ are parallel. It is not given. Okay? This is the after I prove it's a parallelogram. तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि AB and PQ are parallel. अभी नहीं बोल सकता मैं. ठीक है? So, but if you use interior alternate angle, I cannot say ना why AB and PQ are parallel. AB and PQ parallel है बेटा, नहीं है ना, इसलिए I cannot use. Otherwise मैं definitely करता. ठीक है? हाँ, but ये दोनों लाइन parallel है, हाँ है, because ABC is a parallelogram. Okay? चलो. Now last, since अभी ये since AB PQ is a parallelogram, can I say AB is equals to PQ? Can I say AB equals to PQ? Why? AB PQ is a parallelogram. अभी मैंने prove कर चुका हूँ. Also I can say AB is equals to CD. Why? AB CD is a parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. बराबर बेटा? Combining both of them, can I say now? PQ is equal to CD. तो फिर तीनों 3 points prove हो चुके. Are you okay बेटा? डायग्राम पहले बनाना सीखो. प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. मैं इसको एक्सटेंड करके ऐसे भी बोल सकता हूं. प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ये बाइसेक्टर है, ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम. यस 2x तो अपना एकदम बे है. ठीक है गाइस, इधर देखो बेटा, मुझे प्रूव करना है AP and CQ आर पैरेलल. मैं तुम लोग को एक्सटेंड करके ये भी बोल सकता हूँ कि प्रूव दैट AP CQ इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है बेटा? I can also ask you to show that AP CQ is a parallelogram. See how? Because of bisect opposite angles of parallelogram are equal. तो ये 2x है तो ये भी ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये x हो गया, ये भी x हो गया. बेटा अभी ये दोनों लाइन पैरेलल है. तो अगर ये x है मेरा बच्चा, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी x. सिमिलरली ये x है मेरा बच्चा, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी x. अगर ये x है मेरा बच्चा, तो ये x है तो ये 180 minus x. तो अगर ध्यान से आप पैरेललोग्राम खाली AP CQ पे फोकस करोगे, AP CQ पे खाली फोकस करोगे बेटा, तो ये x है, ये भी x है, ये 180 minus x है, ये भी 180 minus x है. Since both the opposite angles are equal, it's a parallelogram. डायरेक्टली ऑल्सो ये प्रूव करने की भी जरूरत नहीं थी. ये तो मुझे बताना था आपको कि अगर पैरेललोग्राम भी पोल है प्रूव करने को तो कर सकते थे आप. डायरेक्टली आपको ये पैरेललोग्राम प्रूव करने की जरूरत नहीं थी. क्यों ऐसा? खाली अगर पैरेलल बोलते हैं ना, खाली पैरेलल बोलते हैं ना, वो लोग खाली पैरेलल बोलते हैं, तो मेरे को आंसर ऑलरेडी मिल चुका था. ये x था, ये भी x था, तो मैं बोल सकता कि सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इट्स अ पैरेलल. बराबर? या फिर कोई बोल सकता था ऐसा कि सर ये 180 माइनस x है, कोइंडियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हेंस दे आर पैरेलल. ठीक है? मल्टीपल वेज टू शो इट्स अ पैरेलल. बट मल्टीपल वेज टू शो इट्स पैरेलल. बट पैरेललोग्राम अगर बोल दिया होता तो मैं बोलता सिंस बोथ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सिंस बोथ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, So will this be there today's test? इट्स अ पैरेललोग्राम. इधर 3 आवर टेस्ट आराम से बैठ के लिखो. ठीक है? लेंथी है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी रहता है जाने दो, पर लिखो. ये तनिष्क टेस्ट नहीं लिखता.
Okay, guys, question number 8 and question number 16 ditto same as question number 2 we did. ठीक है, खाली वेरिएबल्स ऊपर नीचे किए हैं. बराबर. इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, सॉरी इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे. देन विल से डीएम एंड डीएन आर इक्वल. लिख देता हूं मेन स्टेटमेंट. चलो बोलो, तुम लोग ही बोलो क्या होगा. Triangle AMB will be become congruent to triangle CND by SAS test. बराबर, SAS test. And therefore by CPCT BM is equals to DN by CPCT. Okay, and secondly हम लोग ये दो triangle को congruent प्रूव करेंगे. Triangle AMD congruent to triangle CNB again by SAS test, and therefore by CPCT I can say DM is equals to BM by CPCT. Therefore combining both of them, quadrilateral BMDN is a parallelogram. Since both opposite sides are equal, बराबर बेटा. Perfect. Prove that APCQ is a parallelogram. Prove that APCQ is a parallelogram. बेटा ये I personally want you to solve also this and write it down अच्छे से in your notes, because whatever given in our notes solution book में and today what I am going to teach is little bit different. This is much easier and simpler and faster. ठीक है, जैसा नोट करना इसको तो definitely. Fine, pay attention. बेटा it is given AP and CQ are bisectors. AP and CQ are bisectors. Prove that APCQ is a parallelogram. So I am going to start with this two triangle. ये triangle दिख रहा है आपको APD and CBQ दिख रहा है आपको बेटा. बराबर. तो चलो बेटा BC is equals to AD. Can I say? ये angle and ये angle equal, alternate. And since it's a parallelogram and opposites a bisector है तो XX, ठीक है. Therefore these two triangles are congruent by ASA test. कौन सा test? ASA test. ASA test. Can I say? This one, this X and this X you are talking? Yeah. See, it's a bisector. So अगर ये 2X है, triangle CB. But because of bisector, because of this is a bisector, Yeah, because X so x ये भी bisector होगा x. Understood बेटा? तो ये x and x हुआ bisector की वजह से. ये दोनों साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एंड ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से. ठीक है. देखो फर्स्ट स्टेप, ट्रायंगल APD congruent to triangle BCQ, sorry, ACD, So BDC. CBQ by ASA test. Therefore by CPCT I can say AP is equals to CQ by CPCT. Second, बराबर है. सिमिलरली नहीं, इधर ना और एक चीज करूँगा मैं. Can I write by CPCT, by DP and BQ also become equal? DP is equals to BQ by CPCT. Now I can use this in the second part. I'll prove this two triangles equal. Now, ठीक है, कैसे बेटा? AB and CD are equal. BQ is equal to DP अभी प्रूव किया. And ये और ये alternate angles. Therefore triangle ABQ congruent to triangle CDP by SAS test. Therefore by CPCT I can say AQ is equals to CP by CPCT. Okay, AQ equal to CP by CPCT. Sure. Therefore, okay, therefore quadrilateral APCQ is a parallelogram since both opposite sides are okay.
मैंने ना इधर CPCD से ये प्रूव कर दिया BQ एंड DP वर इक्वल, उसके बिना मैं नहीं प्रूव कर पा रहा था ये दो ट्रायंगल को इक्वल। अंडरस्टूड बेटा? श्योर? स्पेसिफिकली ये सब तो कॉपी करना ही करना है आपको। So give me a minute again. Why not? I'll start with. So basically, it's a AP and CQ are the bisectors. क्या है बेटा? कौन है bisector? AP and C. This one. This AP and this CQ are the bisectors. Okay, बेटा? So obviously, angle A and angle C has to be equal to x because opposite angles are equal in a parallelogram. Since the bisector, this became x, this also became x. This became x, this also became x बेटा, bisector की वजह से x और x में डिवाइड हो गया। चलो, now take this two triangle, ये x और ये x, ये दोनों alternate angles और ये दोनों side equal, बराबर? Therefore two triangles are component by ASA test, ASA test. Therefore by CPCD I know AP and CQ तो equal हो गया, बराबर बेटा? बराबर? वो एक मेन चीज हो गया। But simultaneously मैंने CPCD से बोल दिया कि BP and DQ are also equal, which help me in proving these two triangles to be component by SAS test. Sure, everyone understood बेटा? इधर बोला है EF and BD bisect each other, ठीक है? It is given AE equal to CF. We all know in a parallelogram opposite sides are equal, so AB and CD has to be equal. Therefore, what is AB made up of? AE plus BE. What is CD made up of? But AE and CF are equal. Therefore, I can conclude BE equals to DF. Okay. BE and DF became equal, vertically opposite angles and alternate angles. Therefore, triangle OFD congruent to triangle OEB by AAS test. Therefore, by CPCDC I can say OF equals to OE and OB equals to OD by CPCD. Hence they bisect. Okay? खाली इधर ये बार मेन स्टेप था कि प्रूव दैट ये दोनों भी इक्वल हो जाए। ठीक है गाइस, इधर देखो सबसे इजी सम बेटा, प्लीज पे अटेंशन। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये रेक्टेंगल है, प्रूव दैट इट डायगोनल्स आर इक्वल। Pythagoras is one of the way. So ये triangle ले लो बेटा। सी अंडरस्टैंड व्हेन दे आस्क यू सर्टेन, बिकॉज़ वी ऑल नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो जब भी ये प्रॉपर्टी को कोई भी प्रूव करने को बोले ना, दैट मींस एक्सेप्ट फॉर दैट प्रॉपर्टी यू कैन यूज एनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। एक्सेप्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी यू कैन यूज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल टू प्रूव द गिवन प्रॉपर्टी। सो एबीडी ट्रायंगल लिया एंड एबीसी लिया। बोलो, बहुत इजी है। बोलो बोलो बोलो। Opposite sides of rectangle are equal 90 degrees and common angles. Therefore, triangle ABD congruent to triangle ABC by SAS test and by CPCD I can say BD equals to AC. हो गया तो easy. If the diagonals of parallelogram are equal, मतलब given है parallelogram, but उन्होंने बोला कि diagonals are equal in this case. In this case उन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम है बट उसके डायगोनल्स इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी। नो इट्स नॉट सो सेम, अप्रोच विल बी सेम बट यू नो एग्जीक्यूशन में थोड़ा अलग होगा। सो इन दिस केस दे हैव गिवन डायगोनल्स आर इक्वल, तो BD and AC are equal, बराबर बेटा? Opposite sides of parallelogram also we know it's equal. Okay, and AB is a common side. Therefore, can I say triangle ABD congruent to triangle ABC by SSS test? Therefore, by CPCDC I can say the angle A, the entire angle A and entire angle B are equal. Can I say the entire angle A and entire angle B are equal? Therefore, angle BAD is equals to angle
ABC equals to x by CPCD. बेटा but we all know in parallelogram also adjacent angles are supplementary. So x plus x is 180. Angle A plus angle C is 180 because in parallelogram adjacent angles are supplementary. X is 90. So 2x equals to 180. X is 90. Are you comfortable everyone? Since each angle is 90, And opposite sides are equal. therefore it's a परफेक्ट. चलो समझ में आया बेटा इधर तक? आर यू कंफर्टेबल गाइस? आर यू रियली कंफर्टेबल विद दिस सम्स अब तक? Yes, yes. Hope so you are comfortable till sum number 13 guys. Now just couple of sums left. 14, 15, 16. So in some did we do last class on Friday? Like some did we do last class on The Friday? remaining sums. So, Okay, so these are the like later sums. Okay guys, 14, 15, 16, 17 last sums. Okay. चल बेटा इधर आराम से you take your time to write later on. ठीक है? I'm not going to read it. Also I have recorded session for you all. I'll upload also. चल guys, show that diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. We all know they bisect each other at 90 degree. We have to show that. So except for this property of rhombus, I can use any other properties to show that diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. बेटा what do you mean by bisect each other first of all? मतलब मुझे प्रूव करना पड़ेगा OA and OC, that is to prove मुझे क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? OA और OC इक्वल, OB और OD इक्वल एंड AC परपेंडिकुलर टू BD. ठीक है? परफेक्ट बेटा, ये प्रूव करना है अपने को 100% बेटा. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बेटा वी ऑल नो डायगोनल ऑफ अ rhombus. कंप्लीट द स्टेटमेंट. Bisect each other 90 degree is one property. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? They bisect the angles. They bisect the angles. They bisect the angles. Perfect. Okay. So first I'll start with these two triangles. Okay. So diagonals of rhombus bisects the angles. मतलब ये और ये bisect करता है, ये और ये bisect करता है, ये और ये bisect और ये और ये bisect. ठीक है? तो मुझे प्रूफ करना है OA और OC इक्वल, आई टेक दिस टू ट्रायंगल्स. कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको बेटा? दिख रहा है आपको OAB एंड OCB दिख रहा है बेटा आपको? So these two are bisected की वजह से इक्वल हो गए. OB is a common side. बराबर बेटा? And can I say AB and BC are equal because it's a rhombus? so but you could have taken same angle also. मतलब OCB and OA. हाँ, I could have taken. So A ऐसे टेस्ट होता Can है. you also say like O? तो A ऐसे टेस्ट होता है. Can you also- So can you also say O is equal to OC? OA equals OC वो तो प्रूफ करना है. Oh. हाँ, therefore triangle AOB congruent to triangle COB by SAS test. मैंने SAS test से किया. अगर ये एंगल लेते तो A ऐसे टेस्ट बन जाता. हाँ, doesn't matter. Therefore by CPCD can I say my child OA equals to OC. Okay. Similarly, my child, listen, my child. Everyone, pay attention. Everyone, something important. Similarly, can I say 90 degree proof करना है आपको? क्या proof करना है? 90 degree proof करना है. So can I say by CPCD this angle and this angle are equal? It's the same thing here. हाँ. Therefore, can I say angle AOB is equals to angle BOC is equals to x by CPCD? बराबर बेटा? But angle AOB plus angle COB equals to 180. Angle on a straight line, ये linear pair. X plus x is 180. 2x equals to 180. X is 90. 90 degrees. Okay बेटा? Therefore AC perpendicular to BD. Perfect. And lastly, मुझे फिर से OB और OD बाकी रह गया. So I take this two triangle. और सेम तरीके से प्रूव करेंगे. ODC and OBD. बराबर बेटा? So I'll prove. कैसे प्रूव करूँगा बेटा? ये एंगल इक्वल है, कॉमन साइड, and each side of rhombus are equal. Therefore triangle बोलो बेटा,
DOC congruent to triangle DOC by SAS test, and therefore by CPCT OC OB equals to, ठीक है, एंटायर सम, या व्हाई नॉट. सो बेसिकली मुझे प्रूव करना था डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेप्ट इच एट 90 डिग्री. तो मुझे प्रूव करना था मेरा OA और OC इक्वल, OB और OD इक्वल, एज वेल एज परपेंडिकुलर, एज वेल एज परपेंडिकुलर. दो तीन चीज प्रूव करनी थी. तो मैंने आई स्टार्टेड विद दिस टू ट्रायंगल्स. बेटा व्हाई दिस टू एंगल्स आर इक्वल? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल्स. तो इसे ये दोनों एंगल इक्वल. ये दोनों साइड क्यों इक्वल? No, it's a rhombus, na? So all sides of rhombus are equal, and OB is a common side. So two triangles are congruent by SAS test. Therefore by CPCT I can say OA and OC equal. मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. अभी मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है. कैसे प्रूव करूं? कैन आई से by CPCT these two angles are equal? क्यों? Because CPCT. But the addition has to be 180. Linear pair या angle on a straight line. So x is 90 degree. मतलब मेरे को 90 डिग्री चाहिए था, मिल गया. Okay, and lastly, to prove OB and OD equal, I took this two triangle. You don't have taken this two triangles, so I don't know any two triangles. So I have a question. Yes. So can't you just take like a diagonal bisect each other into equal halves and then take half, 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 then you can do equal sides. बेटा वो इधर प्रूव कर रहा है diagonal bisect each other. लिखा है statement show that diagonals of rhombus bisect each other. No, At not 90 degree, but No, bisect each other at 90 degree है. मतलब you have to prove that they are bisecting also at 90 degrees. Both properties. Okay, otherwise easy हो जाता. अभी देखो, if diagonals of quadrilateral bisect each other at 90 degree, prove it's a rhombus. उल्टा. Okay, कि भाई एक quadrilateral है, बेटा understand this sum. एक random quadrilateral है, एक random quadrilateral है ABCD. उसमें my diagonals are bisecting each other at 90 degrees. Bisecting each other at 90 degrees. Okay, bisecting each other at 90 degrees. मुझे प्रूव करना है कि ये रोम्बस है. बहुत इजी है, खाली थोड़ा लेंथी मैं मेथड बता रहा हूँ. देखो बेटा, बेटा इधर देखो एवरीवन. आई नेम इट ट्रायंगल 1 2 3 and 4. ओके, इधर देखो बेटा. सो फर्स्ट आई प्रूव ट्रायंगल A एंड ट्रायंगल B 1 and 2 आर कॉन्ग्रुएंट. कैसे? ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB by SAS test. Therefore, by CPCT, I can say AB and BC are equal. Second step, मैं अभी 2 and 3 को congruent prove करूँगा. Triangle BOC congruent to triangle DOC by SAS test, and therefore I can say DC is equals to BC. all sides are equal by axis. Okay, CPCT. थर्ड एंड फोर्थ को इक्वल प्रूव करूंगा. ट्रायंगल AOD congruent to triangle COD by SAS and therefore AD equals to CD. Okay, therefore from 1 2 and 3 I can conclude AB and BC equal, BC and CD equal, CD and DA equal. Since all four sides are equal, the given quadrilateral is a parallelogram. बेटा ये तो मैं 100% नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 16, 2nd and 8 all are same. ठीक है? Now last sum, pay attention. Very nice sum. I enjoy this sum. Show that bisectors of opposite angles form a rectangle. मतलब ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है. They form a rectangle. मतलब PQRS is a rectangle prove करना है मेरे को. बेटा opposite sides of opposite angles of parallelogram are Equal. तो मैं इसको x x ले लूँ, तो इसको भी x x, y y y y. But we all know 2x plus 2y is adjacent angles are supplementary. So x plus y is 90. Okay, हो गया सब. I'll tell you how. In triangle APB दिख रहा है. Oh yeah, अगर so x plus we are y, having at the bottom and then it becomes x plus y. x plus y is 90. So this has to be 90. X plus y is 90. So this has to be 90. X plus y is 90. So this angle has to be 90. So this has to be 90. X plus y is 90. So this has to be 90. Since all four angles are 90 degrees, it's a
rectangle, and that officially completes your syllabus. Sir, Okay? can it also become a square? या बेटा स्क्वायर आगे अगर स्क्वायर बोलते तो मुझे और प्रूफ करना पड़ता रेक्टेंगल इज द बेसिक स्ट्रक्चर Yeah. ओके रेक्टेंगल इज द बेसिक स्ट्रक्चर उसके ऊपर मुझे प्रूफ करने को बोलते हैं तो मैं स्क्वायर